Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear children. I'm going to teach you general science, and for that you need these books. Number 1, textbook General Science CSS series, Cantab Publishers. Number 2, summer pack for doing your summer task. Number 3, all the activities are given in the book workbook Science 2. Beside that, you may need further help. For that, we are having resource pack. Either your teacher or your parents can download resource pack from the official website of the Cantab Publishers. So, my dear students, get ready to learn Science 2. Dear students, we are going to start the topic major parts of plant. Before this, we studied about the different types of plants and what plants are doing for us. Now, we will see that what are the major parts of plants. So, सबसे पहले that is root, number 2 stem and number 3 leaf. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे root, stem and leaf. Now, we will see कि root का क्या काम है, stem का क्या काम है और leaf का क्या काम है. Just have a glance on the text and then we will go towards lecture. Root is the underground part of the plant. It acts as a straw which absorbs water from the soil. Roots help the plant to anchor into the soil. Some roots are edible. Edible are those roots which we can eat. They store nutrients and become thick. We usually use them in our daily diet. For example, carrot, radish and turnip. Did you see carrot? Yes. Gajar. Do you like to eat? Okay. And radish and turnip. So these are those roots which we eat in our routine. And number 2 is stem. Stem is the aerial part of the plant. Aerial means which is above the ground and that is in air. It gives support to leaves and branches. It carries water and nutrients from the root to the other parts of plant. And number 3, leaves. Leaves is a plural of leaf. Leaves are also the aerial part of the plant. They are green in color. They make food for the plant in the presence of sunlight. They have midribs in the center. Veins arise from midrib. A leaf has a leaf stack, petioles, through which leaf is attached to the stem. प्यारे बच्चों, while going through this text, now we are coming here. See this plant and this is ground. You see one part which is underground, जो जमीन के अंदर है. Dear students, जब यहाँ seed हम grow करते हैं इन्हीं soil में, तो एक पार्ट नीचे आने शुरू हो जाता है. जो पार्ट नीचे जमीन में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट. और जो पार्ट ऊपर चलने लगता है, ये इसको हम शूट भी कहते हैं. और जब ये एक प्लांट बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेम. माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेम के एंड पे या बिल्कुल मिड में भी हो सकता है, हमें ग्रीन कलर के कुछ मटेरियल्स नजर आते हैं. इसको क्या कहते हैं? दिस इज लीफ. डियर स्टूडेंट्स, रूट्स का अलग काम है, स्टेम का अलग काम है और लीफ का अलग काम है. मुख्तलिफ कैन फंक्शंस दे परफॉर्म. सम ऑफ द प्लांट्स इन तीनों के अलावा, यानी 1, 2, 3,
कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स फ्लावर भी रखते हैं। फ्लावर इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट, very important part of plant, but this is not the major part of plant. The major parts of plants are the three. Number 1 root, number 2 stem, and number 3 leaf. Now let's see that what is the function of these roots. You know, underground पानी होता है और रूट्स क्या करते हैं, ये स्ट्रॉ की तरह होते हैं, इनके अंदर पानी आ जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये पानी, ये भी स्टेम स्ट्रॉ की तरह उसके अंदर नीचे से ऊपर जाता है। और आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सन रेज पहुंचती हैं पौधों के, प्लांट्स को। तो ये जो इनको सनरेज आती हैं, सनरेज की मदद से नीचे से पानी जाता है, और ये जो ग्रीन पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एज आई स्टेटेड अर्लियर, इसमें एक केमिकल होता है जिस केमिकल का नाम है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल की मदद से, की मौजूदगी में, सनलाइट की मदद से पौधे खुराक तैयार करते हैं, और जब ये बन जाए तो ये खुराक वापस स्टेम में भी आता है और रूट्स में भी आता है। और ये जो छोटा प्लांट होता है ये बड़ा किस मदद से होता है, ये उस खुराक से बड़ा होता है जो खुराक पौधे खुद बनाते हैं। और जो भी जानदार अपनी खुराक खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रफ, और जो खुद नहीं बनाते उनको कहते हैं हेटेरोट्रफ। तो प्यारे बच्चों, प्लांट्स आर ऑटोट्रफ इन नेचर, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उनके प्लांट्स खुद भी उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं और हम भी उससे लेते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये लीफ है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज पेट्रियोल या लीफ स्टेक इसको बोलते हैं। दरमियान में एक थोड़ा सा वेन की तरह, यानी खदरे तिक एक तार जैसे गए होता है, इसको बोलते हैं मिडरिब। और इस मिडरिब के में अंदर छोटे छोटे और वेन्स होते हैं, उनको वेन्स कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द लीफ ब्लेड्स की तरह शक्लें होती हैं और इनको ब्लेड कहते हैं। और एक पोर्शन जो इस तरफ होता है पत्ते का, उसको लमिना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के मुख्तलिफ टाइप से वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक आज के सेशन के लिए काफी है, लेकिन आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आपने होमवर्क में अपना वर्क बुक उठाना है और वर्क बुक में यानी इस टॉपिक के ऊपर जितनी एक्टिविटीज है वो आपने आज ही सॉल्व करनी है। और इसके साथ आपको ऑलरेडी पता है द समर पैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू ओपन योर समर पैक एंड लेबल ऑल द डायग्राम्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। Thank you very much dear student. See you in the next class. Allah Hafiz.